Hello students, the question is a thin plastic rod is bent into a circular ring of radius capital R. It is uniformly charged with charge density lambda. The magnitude of the electric field at its center is option A lambda upon 2 epsilon naught R, option B 0, option C lambda upon 4 pi epsilon naught R, and option D lambda upon 4 epsilon naught R. So the problem is based on the topic electric field, and here there is a rod having charge density lambda. It is having a certain length, and it is bent into a circle, into a circular ring. And we have to find out the electric field at the center of this ring. So this is an analytical problem. In this particular problem, if we want to calculate the field at this particular point, then we can easily analyze that. Suppose if we take a small charge segment here and calculate the electric field at O. Suppose this particular charge is positive. In this particular problem, it is not mentioned that whether the charge density corresponds to a positive or negative, because it does not affect the answer whether it is positive or negative. Suppose it is positive. Suppose this is positive, and we take this small segment here and calculate the electric field at this particular point. So the electric field is in this particular direction, having a certain magnitude. Let us call this magnitude as E1. Similarly, exactly at the diametrically opposite end of this ring, at a point here, we take a small segment of charge and calculate the electric field at O. Then at O point, the electric field is in this direction. And suppose the electric field is having a value of E2. So we know that since the distance is same from O to these respective points, as well as we take the charge as same because we have taken the equal lengths of this small segment, then we can easily see that E1 is equal to E2 in magnitude, but opposite in direction. So we can say that both the electric fields cancels each other. In a similar manner, if we take a small segment here and calculate the electric field at O, so the direction of electric field is this, and suppose the electric field is here E3, then exactly at the diametrically opposite end here, we take a small segment, then electric field at O is in this direction, and suppose this is having a magnitude of E4. So since the distance is same from the respective these small segments, as well as the charge is same in this segment, so E3 and E4 both are having the same magnitude. Magnitude is equal, but the direction is opposite. So they also cancels each other. In a similar manner, if we take small segments, suppose we take small segments here and here, and so on, then at the exactly diametrically opposite end, we can find such a segment which cancels the electric field with the first segment. In this way, due to the symmetry, the overall field at the center is 0. So we can certainly say that the electric field at the center is 0. If the charge is assumed to be negative, then the direction is towards the charge. For example, we take this segment as negative charge, then the electric field is in this direction. And at the exactly diametrically opposite end, suppose here, the negative charge is having the electric field in this direction at point O. So in this way also we can say that the electric field cancels each other in both ways. Whether we take the positive charge or the negative charge, in both cases the overall electric field is 0. So the net field is 0 here. So option B is correct here. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि थिन प्लास्टिक रॉड है, उसको एक सर्कुलर रिंग की शेप दी गई है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है. यूनिफॉर्मली इसकी चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे रिंग के ऊपर, और वो वैल्यू लेमडा दी गई है. मैग्नीट्यूड बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके सेंटर पे, इस सर्कुलर रिंग के सेंटर पे मैग्नीट्यूड बताना है. तो यहाँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमने इस रिंग को ड्रॉ किया और उसके साथ साथ हमने एक सर्टेन सेगमेंट लिया छोटा सा, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया. फॉर एग्जांपल, अगर हम इसकी चार्ज डेंसिटी को पॉजिटिव मान के चलते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन होगी, इसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होगा.
इसी तरह से एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे हमने एक स्मॉल चार्ज लिया, सेम वैल्यू का, स्मॉल सेगमेंट उतना ही लिया, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी कुछ ये डायरेक्शन होगी, अपोजिट होगी और इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। तो ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह से हमने सपोज एक सेगमेंट और ले लिया, उसके अपोजिट एंड पे हमने एक और सेगमेंट ले लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग फील्ड्स भी जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह से हम हर एक छोटे छोटे एलिमेंट यहाँ पे लेते चलेंगे और एग्जैक्टली डायमेट्रिकली अपोजिट एंड के करस्पॉन्डिंग स्मॉल सेगमेंट्स लेते जाएंगे, जिससे कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखने में आएगा कि वो हो जाएगा जीरो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं दैट द ओवरऑल फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर रिंग इज जीरो। यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्कुलर रिंग के सेंटर पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।